Welcome to Jannat Learning Digital Class. Today lesson MTH 302 Business Mathematics and Statistics. Lecture 38 Pattern of Probability, Binomial Poisson and Normal Distribution of Virtual University of Pakistan. The probability that a student is accepted to a prestigious college is 0.3. If 5 students from the same school apply, what is the probability that at most 2 are accepted? To solve this problem, we have to use Microsoft Excel formula binom.dist.range. We have to take care this statement. In mathematics, at most 2 mean equal 2 or less than 2, at least 2 mean equal 2 or greater than 2. For this question, we have data trials equal to 5, probability equal to 0.3, and the range will be from 0 to 2. Let's check in next slide. It's very simple. कि हमारे पास वैल्यूज ऑलरेडी मौजूद हैं. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स 5, प्रोबेबिलिटी 0.3, स्टार्ट रेंज है 0 और एंड 0 to 2 तक है. यहाँ पे फार्मूला इंसर्ट that's all. Now we find out the values of the binomial distribution chart. Same. Look at this. We have probability, number of terms n 5 as it is mentioned, and probability is 0.30 and outcome 2. So in this way you see this. The value is 8.37. This. इसी तरह एक और मिसाल है कि वीक टाइम में probability of wet days is 60%. So if they have to calculate 5 or more wet days. So how can we make it? देखना यह है कि हमारे पास डाटा मौजूद है. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल 7, probability of success 0.60%, 0.6, रेंज स्टार्ट हुई 5 से 7 तक. सिंपल है, वहाँ को लगाना है फार्मूला. इंसर्ट फंक्शन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रेंज. ट्रायल की वैल्यूज देनी है 7 और प्रोबेबिलिटी की 6.6. नंबर शुरू होगा 5 से और एंड होगा 7 पे. ओके करना है तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. Today's discussion is cumulative binomial probabilities. It can be explained by example. By some estimates, 20% of people have no health insurance. Randomly sample 15 people. Let X denote the number in the sample with no health insurance. What is the probability that exactly 3 of the 15 sampled have no health insurance? The random variable X can be assumed to follow a binomial distribution with n equals 15 and probability equal to 0.2. Using the probability mass function for a binomial random variable, the calculation is then relatively straightforward. I repeat again, what is the probability that more than 7, concentrate on the statement that more than 7 have no health insurance. When we say more than 7, it means a cumulative binomial probability refers to the probability that the binomial random variable falls within a specified range. For example, it is greater than or equal to a stated lower limit and less than or equal to a stated upper limit. This would be the sum of all these individual binomial probabilities. In a transmission where 8-bit message is transmitted electronically, there is 10% probability of 1 bit being transmitted erroneously. What is the chance that entire message is transmitted correctly? क्योंकि इसमें कोई रेंज नहीं है तो ये नॉर्मल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है.
सिंपल नंबर ऑफ सक्सेस इन ट्रायल 0 है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन ईच ट्रायल 0.1 और कम्युलेटिव इज ट्रू है। तो सिंपल फार्मूला फंक्शन में जाके बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन यूज़ करेंगे और नंबर की वैल्यू 0 है और इसी तरह ट्रायल जो है हमारे पास 8 है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 10% है और कम्युलेटिव हमारा ट्रू है। तो इसे एंटर करेंगे, बस वैल्यूज आ जाएंगी। A surgery is successful for 75% patients. What is the probability of its success in at least 7 cases out of randomly selected 9 patients? ये एक और सिंपल मिसाल है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स में 9 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन ईच ट्रायल 0.75 और रेंज जो 7 से ज़्यादा और मैक्सिमम 9 होने चाहिए, उसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट 7। तो बड़े सिंपल है, इसमें भी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रेंज का फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला है इंसर्ट सिंपल बायो और नंबर ऑफ ट्रायल्स, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर नंबर जो शामिल शुरू होनी है स्लोएस्ट रेंज और फिर आपने बिल्कुल 60% आंसर आ गया। जन्नत लर्निंग डिजिटल क्लास में शिरकत का शुक्रिया। हमारा मिशन आपको तालीमी कामयाबी में मदद करना, आपके तालीमी सफ़र को हमवार और खुशगवार बनाना और आज के लिए जामे हल, मददगार वसाइल और माहिराना रहनुमाई फ़राहम करना है। हमारे कंटेंट में स्टडी की तजावीज़, इम्तिहान की तैयारी, इसकी हिकमत अमली, कोर्स के जायज़ा और बहुत कुछ शामिल है। सीखने वालों की हौसला अफजाई के लिए हमारी कम्युनिटी में शामिल हूँ। आइए मिलकर तालीमी जिद्दत की दुनिया को फ़तह करें। बाकायदा अपडेट्स और कीमती इंसाइट के लिए जन्नत लर्निंग को सब्सक्राइब करें।